Good afternoon to one and all present over here, honorable chief guests, respected teachers and my dear friends. Today I am standing over here to say something over the topic Swami Vivekananda as a current inspiration for today's youth. Swami Vivekananda was an Indian Hindu monk, philosopher, author and a religious teacher. He was called as the inspiration for the youth. Every year on 12th of January, National Youth Day is celebrated to honor the birth anniversary of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a great inspiration for the youth. That's why on his birth anniversary, National Youth Day is celebrated. With his message, he broke all the shackles of caste and creed and spoke of the language of universal brotherhood. He was the one who believed that the youth are the one who can change the world with the power of youth, and he believed that youth must be focused and the main goal of life must be service to the humanity. He always urged the Indian youth to educate themselves and to dedicate their life for the service of the society. The youth must have the aim to service to the society because it is a privilege to serve to the humanity. Because we can't worship to the God directly. By way of service to the humanity, we can serve to the God or we can worship to the God. So he urged the youth that their main goal of life must be to do something noble, to do something good for the society. He also told that the youth of the nation must be united with each other. They must stay united and they must work together for the better future of the nation. If youths are united in the nation, then such nation will grow and progress a lot in the world. He also told that our education must not be that we should put some amount of information in our mind and we will go through it along our life. Education must be something that helps in man making, life building and character making. Character making is very much important. Being a youth, the education system must teach the youths how their culture should be, how their behavior should be, how they should behave, what should be their character. Character building is very much important. Being a youth, their character must be good. If a person having a good character, he can achieve a goal, achieve success in his life. Education is obviously important, but character is much important than that. So our education system much helps in making character and bring a strong character in the youths. With this, I want to say the famous quotation of Sri Swami Vivekananda. He told once that, arise, awake and stop not until the goal is reached. So with this quotation, he wants to tell the youth of the nation that they must arise, they must awake and they must not give up until they reach the goal. How many problems they may come in their life, how much hurdles they may come, they must not give up and they must go on and go on until they reach the goal. So they must have work patiently, hard work, and with high goals they must reach their goal. So with this I want to conclude my speech by saluting Sri Swami Vivekananda for his inspirational words. I hope these inspirational words will help a lot to the youth of our nation, and I wish that his thoughts may remain immortal even after the coming generation also. Thank you very much. Take risks in your life. If you win, you can lead, and if you lost, you can be guided. It is a famous quote by Swami Vivekananda. ଭାରତର ବେଦାନ୍ତ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନୀତିକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। The secret of getting ahead is getting started. So I like to start my speech by wishing all a warm afternoon. Myself as APAD, I would like to start my speech. First of all, I like to question: if you think Swami Vivekananda is only a religious leader, then you all are wrong. He was a youth icon. He was born on 12 January 1863. On the 12 January, our nation celebrates the National Youth Day. But why? What the qualities of him made him so special? Would these qualities
My heartiest greeting to the Honorable Chief Guest, respected principals, sir, all teachers and everyone present here. My name is Kiran Kumari Sahu. Now I would like present speech as Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, whose real name is Narendra Nath Datta. His father name is Vishwanath Datta and his mother name is Bhuvaneshwari Devi. Swami Vivekananda educated himself thoroughly Indian philosophy and religion. Swami Vivekananda was always find out the deeper meaning of the life. Swami Vivekananda finding out the deeper meaning of life. 19th century Indian master Sri Ramakrishna, from his guru Sri Ramakrishna, he learned that we found God. Humanity for us. Very good afternoon to one and all present here. Today I am standing here before you to speak on the topic Swami Vivekananda being inspiration for the current generation. Swami Vivekananda was a great believer in the potential of the youth to change the world. He also urged the Indian youth to educate themselves and also emphasized that how they can make the service the main goal of their life. He said it is a very great privilege to serve mankind because it is one way or other the worship of God. And once we don't worship God, but actually we can achieve God when we serve mankind. He is always there present in the human souls. He is the soul of man. He also said that God is the soul of man. At the same time, I would like to say that Swami Vivekananda also coined a term that is called Daridra Narayana, which means that God is there in the lowly and the poor. अग्रपूजा गजानन परमपूजा भारतमाता एठारे उपस्थित थिबा संभवती महोदय एवं मोर सहपाठीगण आज शुभ अवसर में विश्व विजयी स्वामी विवेकानंद विषय किसी कहवाक सुजोग पाइबार मु निजक धन्य मन करुछि। सनातन धर्मर प्रवक्ता थिले स्वामी विवेकानंद, जार पिलादिनर नाम थिला नरेंद्र दत्त। से जेतेबेले निजर शिक्षा समाप्ति पर आध्यात्मिक भाव में भारत भ्रमण करने बाहरी थिले, से अन्य केतक पुरुष मानक सहित साक्षात करके प्रश्न करथिले कि गोटे भगवान को देखिछ। जेतेबेले तांकर प्रश्न सुनिकी जड़े ही आंसर देले, से रामकृष्ण परमहंस। से कहले हाँ मु देखिछि, से भगवान होचंदी सेम तो पर ही देखिबाकू। मु सुधांशु शेखर दास, +3 फाइनल इयर केमिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट। सर्वप्रथम ये उपस्थित थिबा समस्त महामानवीय व्यक्तित्व को मु प्रणाम जनाऊँगी। आज विषय वस्तु उपरे किसी कह सर्वप्रथम विवेकानंद नरेंद्र नाथरु विवेकानंदर यही जो जर्नी अच्छी ताहा ही कहवाक गले गोटे अनोखा। जहाँ मैडम आमको पचार जीवन लक्ष्य कौन, नरेंद्र नाथरु विवेकानंद हेबा ही गोटे जीवन लक्ष्य। नरेंद्र नाथ माने आमे नरेंद्र नाथ जगह आमको रखा विवेकानंद हूँ आमर लक्ष्य। विवेकानंद अर्थ विवेक आनंद, जो थी आमर विवेक आनंद मिली थाए ताहा होची विवेकानंद। विवेक आनंद जो कार्य रही थाए ताहा ही विवेकानंद। जहाँ देखा एवं आमर जहाँ आईनजीवी अच्छा आईनजीवी हूँ विवेकानंद। आमर ये जहाँ अध्यापक माने आम से छात्र जीवन थिले, छात्र मान पढ़ाइबा विवेक आनंद थिला। अध्यापक अच्छा ही विवेकानंद। सी सार जो बसी सी विवेकानंद। ये जो मैडम अच्छा सार अच्छा आमको अमृत बाणी कहले, से आमको सेल्फलेस सर्विस देले, जहाँ निस्वार्थपर सेवा ताहा विवेक आनंद। सी हूँ जगह विवेकानंद। मुझे धन्यवाद ज्ञापन करी। विवेकानंद थिले आमर यूथ आइकन, जहाँ युवक मान गोटे आइकन। से 25 वर्ष बयस जहाँ आम 21 वर्ष 4 वर्ष गले 25 वर्ष आमर कौन लक्ष्य आम जाना। से 25 वर्ष बयस भारत भ्रमण कर भारत समस्त एक्सपीरियंस ग्रहण कले, अभिज्ञता ग्रहण कले। 25-30 वर्ष बयस शिकागो अनुष्ठित होता धर्म संसद रे जाई भारतर संस्कृति को
रिप्रेजेंट कले तांके सेठी विवेकानंद उपस्थित नथिले, उपस्थित थिला भारतर संस्कृति। से जो जे परि भाबे तांको 2 मिनिट दिया जाइता, 2 मिनिट मध्य से भगवा धारण कर जाइले। भगवा ने येलो कलर मैडम जहा कहले येलो कलर को सहित सम्मान दिया जाउनी। सेठी मध्य शिकागो शहर में मध्य तांको सहित सम्मान दिया जाय नथिला। सूट बूट टाई पिंदी थिया लोक मानक मध्य भगवा धारी जने युवक को किए मध्य सेते धन्य सेते रिकॉग्नाइज करनथिला, रेस्पेक्ट देनथिला। तांको 2 मिनिट रो विताड़ित करबा को कहिदिले, किंतु से जेते बेले तांकर प्रकृत आरंभ करथिले माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सेही प्रकृतर प्रथम रही 2 मिनिट जगह 10 मिनिट लोक माने छिड़ा है करताली सह संबर्धना करथिले। तांकर एही प्रथम अर्थ रही डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका रे सेठी विश्व भातृभाव अर्थात भारतर संस्कृति झलसी उठुतिला। जो 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 धर्म संसद रे समस्त धर्म 19 पाखापाखि 183-84 धर्म आसीथिले। से कहथिले मो धर्म बड़, मु बड़, सब बड़, मो धर्म बिना आ किछि धर्म नै। से जो कहिथिले सिस्टर एंड ब्रदर्स विश्व भातृभाव वसुधैव कुटुंबकम, ताहा ही झलसी उठुतिला भारतीय संस्कृति। ताहा कि 2 मिनिट जगह 10 मिनिट केवल करताली बचितिला एवं केते समय से कहि जाइतिले अमृतवाणी दे जाइतिले ताहा जणा जाय नथिला। सेठी विवेकानंद नथिले, थिले हमर भारतीय संस्कृतिर चिंताधारा। से जो भातृभाव थिला डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स। आउ गोटे लक्ष्य करिबा से प्रथमे सिस्टर कहितिले कारण नारी को आगे रखिबा तांकर कर्तव्य। एडे देखिबे बहुत पिला बसिला हमर पुओ पिला 2 जण, झियो पिला 2 अक्षर। एडी मध्ये मु धन्यवाद ज्ञापन करी हमर भाई भौणी मानकु। एया ही होती विवेकानंद का आइकन, यूथ आइकन। आउ किछि यूथ आइकन नै जहा हमर एठे उपस्थित अछन्ते, ताहा ही यूथ आइकन। युव समाज रो आइकन होची यूथ आइकन। अर्थात जहा हमें अनुभव करिबा ताहा ही यूथ। एठी हमर देश रे बहुत युवक आछन्ते, विवेकानंद आछन्ते, भगत सिंह जेपरि युवक तांकर लक्ष्य थिला देश को आजाद करिबा। से तांकर गोटे दिन पूर्व तांको फांसी दिया जायतिला। से सेतिरे तांकर किछि मन दुख नथिला, किंतु से कहिले से गोटे पंक्ति कहि जायतिले, बह गया मेरा वतन इस सतलुज नदी पे, बह गया मेरा वतन में सतलुज नदी पे, रह गया अर्जु इतना ही घूंघट उठाना बाकी रह गया, इस धरती का आजादी का घूंघट देखना रह गया। सेथिबे मु अनुरोध करी विवेकानंदଙ୍କର सेही अमृत वाणी तांकर यूथ आइकन। हमर सबुठारु युव देश होची विश्व रे भारत, जहा 29 वर्षर एवरेज लाइफ। एठी 80 कोटी अछंती भारतीय अछंती। दिने एपीजे अब्दुल कलाम को जतरा पठाइथिला भारतर स्ट्रेंथ कोन से कहिथिला, मोर जो 800 मिलियन अर्थात 80 कोटी युवक अछंती, एहा ही भारतर मुख्य स्ट्रेंथ अछि। इजराइल जहा को बड़ देश कह जाय, तार पूरा जनसंख्या केवल 90 लाख, किंतु हमर केवल यूथ ही 80 कोटी। जदि ताहाको सुचारू रूपे पालन, सुचारू रूपे ठीक रूपे आगु नेबे तांकर सार जहा मैडम को सुबाणी आउरी हमकु यूथ आइकन रूपे भारत को सुदृढ़ करिवो, भारत को विश्वगुरु रूपे भारतर सुनाम रक्षा करिवो। तेणु आमे तांकर सुचारू सुबाणी को आमे आगु नेबा एति कम माननीय सुजुक्त महोदय, एटे सभारे उपस्थित हमर बड़ गुरुजी भाई बड़ भाई और भौणी माने मो सम्मान जणी भाषण स्टार्ट करूची। आज टॉपिक है यो माने युवपीढ़ी को प्रेरणा विवेक। युवपीढ़ी को प्रेरणा कौन? आज तो युवपीढ़ी जो गति गले से खराब गति, माने यूथ आमर जो युवपीढ़ी अच्छे सब माटी में मिसिब गले से केमती फुल उपरको उठा दरकार। जे विवेकानंद आदर्श जो मैंने अच्छा माने प्रेरणा निज को उत्साहित कर विवेकानंद गतिपथरे बाटरे चली शिखिले। जे भी विवेकानंद जेपरी अमेरिका, लंडन, यूरोप ए सब जाई हमर संस्कृति हमर जो परंपरा को शिक्षा दउथिले समस्त से शिक्षा आग्रहित होई हमर भारत जहा विवेकानंद आदर्श सब
ଶିଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ଯେପରିକି ଆମର 1880 ମସିହାରେ ଯେଭଳି ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଦେଖିଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଶିଖି ନେଇ ଗୋଟେ କବାଟ ଇଏରେ ଆଉ ଯଦି କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ତମେ ଭଗବାନ, ତମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛ ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ ହସି ଦେଇ କହିଲେ କି ଏଟା ପାଗଳଟା କହି ପଳେଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜର ଗୁରୁ ଭାବି ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ୟୁଥ୍ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଖରାପ ବାଟରେ ନ ଯାଇ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଦୁଇଟା ଥାଉଛି, ଆମର କୁ ସାଙ୍ଗ ଥାଉଛି, ଆମର ସୁ ସାଙ୍ଗ ଥାଉଛି। କୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଡ଼େଇ ଦେବା, ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆମେ ଯିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜର ନାଁ ଓ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ସବୁ ଉନ୍ନତି କରିବା। ଏତିକି